इनके फेस के लिए मैं यूज़ करूँगी पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। Thinking all I did was wrong. Guess you got all you wanted. Yeah, I don't know what's up. नेक्स्ट स्टेप हम यूज़ करेंगे ये प्राइमर। मेरे पास ये प्राइमर है। तो ये हमें इनके नोज पे और चिक्स पे थोड़ा सा फोरहेड पे लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे ओपन पोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं वो इससे क्लोज हो जाते हैं, और इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जब तक मैंने इनके फेस पे प्राइमर लगाया है, मैं यूज़ कर रही हूँ ये शिल्स का ब्राउन जेल आईलाइनर। इनसे हम इनकी आईब्रोज है जो फिल करेंगे। You're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. आईब्रोज फिल करने के बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर। मैं ये नोट का कंसीलर यूज़ कर रही नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का बनाना पाउडर। जो हमने अभी कंसीलर लगाया था, हमें उसे इसके ऊपर इससे अच्छे से अपना कंसीलर सेट करना है। नेक्स्ट हम करेंगे इनका आई मेकअप। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी इनसाइड का कलर करेक्टर। मैं ऑरेंज और ग्रीन कलर यूज़ करूँगी। ऑरेंज इनके पिगमेंटेशन जो है ब्लैक स्पॉट्स उसके लिए, और जो एक्टिव वो है ना पिंपल्स, उनके लिए हम ग्रीन कलर का कंसीलर यूज़ करेंगे, सॉरी कलर करेक्टर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे मैक स्टूडियो का फाउंडेशन, जो कि इसका शेड NC30 है। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी पर्पल का ये कॉम्पैक्ट पाउडर। इससे हमें इनके फाउंडेशन को जो है सेट करना है। Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Yes, इनका जो बेस है उसको सेट करने के लिए मेकअप स्प्रे का यूज़ करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। पहले हम इसे अच्छे से शेक करेंगे, देन आईज को कवर करके फिर दूर से स्प्रे करेंगे। कॉन्टूरिंग के लिए मैं दोबारा से अपनी इनसाइड की जो पैलेट है कलर करेक्टर वो यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन शेड। How did I not see this coming?
यूज़ करो ना, फेयर एंड नहीं यही सी Me blind. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Yes, only you left me blind. तो ये है हमारा फाइनल लुक।